अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अ ब्रदर, अ फ्रेंड, बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं, लिविंग इन एग्जाइल नाउअडेज फ्रॉम बलूचिस्तान इन डीसी। तो बड़ी मज़ेदार शख्सियत हैं जिनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मलिक सिराज अकबर, वेलकम मलिक सिराज अकबर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। वजह तो चौन है, माझे मन वर्ष तो जोड़े शुक्र है, क्या लेवल। Glad अल्हम्दुलिल्लाह to see you अल्हम्दुलिल्लाह। after maybe like 25 years. I think last time we Yeah, met was it's just like yeah. down in Quetta. It Long was time. 2001 2002 I guess, right? जी बिल्कुल 20 साल हो गए। और I'm so glad to reconnect with you. एक बिल्कुल दुबला पतला नौजवान, आई गेस इट वाज जस्ट यू हैव डन योर मैट्रिक, राइट? मैट्रिक के That's फौरन right. बाद, Yes, मैट्रिक के I फौरन बाद, had done और my matric पंजगूर at से आप Dream आए Club. थे। जी हाँ। पंजगुर, that's my hometown. When I asked you and you were with Siddiq, I guess, and when I asked you कि आप पढ़ने आए हैं, तो सिद्दीक told me कि आप उस वक्त भी पढ़ा रहे थे। जी You were I used to teaching be in a a, language teacher बिल्कुल in हाँ, Panjgur. There was a language institution, so I used to teach there. I learned English from there. तो वहाँ से हमने पढ़ाई की, and there's a fantastic school out there. It used to be called the American English Language Center. हम्म, हम्म, ज़ाहिर हुसैन चलाते हैं, और it's produced like tens of thousands of students by now, 20-25 हाँ, सालों में, and उनके जो students हैं, you find them everywhere in Balochistan now and outside Balochistan, and internationally as well. So I went to school there, learned the language itself, then taught there for 5 years. And as you know, like the way it is in Balochistan, people have to head out of their small towns to Quetta for higher हम्म, education. हम्म, So that's how then I ended up in Quetta. दैट्स राइट। एंड ये बड़ी एक बदकिस्मती है। मैं अक्सर जब अपने बचपन को और नौजवानी को याद करता हूँ, तो जो हमारी क्लास के बहुत काबिल बच्चे थे, वी वर अ बैच ऑफ 30 इन आवर 10th ग्रेड, और जो बहुत काबिल स्टूडेंट थे हमारी क्लास के, जिनमें से एक हमारा दोस्त हस्ती खान, ही वॉज फ्रॉम आबेगोम मच। वो पढ़ने आता था स्कूल, और फिर स्कूलिंग के बाद हमें हमें हमारे पास ऑप्शन होता था, या हम मच से कोयटा जाएं कॉलेज के लिए, या फिर हम सिब्बी जाएं कॉलेज सही। के लिए। सिब्बी वाज नॉट प्रैक्टिकल, तो कोयटा जाते थे। और फिर कोयटा उन दिनों में अफोर्ड करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल था, और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे जहीन फतीन बच्चे जो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते थे, सिर्फ कॉलेज ना होने की वजह से या कॉलेज जाना अफोर्ड ना करने की वजह से, वो they are they are doing good in their lives, but they could contribute more if they had the opportunity. बिल्कुल, I agree. और आप तो पंजगूर से, सिराज जान, पहले तो बलूचिस्तान के बारे में एक तासुर है कि बिल्कुल ही ये कोई पहाड़ पहाड़ और पहाड़ियों का इलाका है, और यहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ दो दो बकरियों के साथ गुजारा कर रहे हैं, इनको सियासी शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक आम जनरल तासुर मेन बलूचिस्तान के बारे में। और ये जो तुर्बत और पंजगूर है, इसके बारे में तो ये एक मुकम्मल तासुर है कि यहाँ पे तो आटा भी ईरान से आता है, यहाँ तो पाकिस्तानी आटा भी नहीं पहुंचता, बिजली भी वहां से आती है। जी तो पहले तो इस तासुर की मनफी कीजिए, लोगों को बताइए कि बलूचिस्तान कितना रिच है। और वो, मुझे इकबाल की बहुत सी बातों से शायद इत्तेफाक ना हो, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में उसकी वो बात ठीक है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साहब। जी मुझे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। It's a tragedy, the way like I have met so many Pakistanis here in America. बहुत सारे पाकिस्तानी जो elite तबके से ताल्लुक रखते हैं, who tell me that this I was the first Baluch they've ever met. And I'm like surprised कि हमें पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में लाहौर या कराची से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी जिंदगी भर क्वेटा नहीं जाते, बलूचिस्तान नहीं जाते, और उन्हें सबसे पहले जिंदगी में किसी के बलूच से मुलाकात होती है तो वो अमेरिका में होती है या लंदन में होती है। एंड दैट्स अ बिग ट्रेजेडी कि लोग फिर मुझसे कहते हैं कि हमें बता दें बलूचिस्तान के बारे में, लाइफ कैसी है वहाँ पे, एज इफ इट्स अ डिफरेंट, हैव टू गेट परमिशन टू गो देयर। लोग मुझसे पूछते हैं। आई थिंक one of the anecdotes that I often mention, which is somehow embarrassing for people, but just it's meant to be food for thought.
there was this senator who was responsible for a committee to look into issues of Balochistan, who told me, Siraj, तुम लोग बलूचिस्तान में कौन सी जुबान बोलते हो? बलूचिस्तानी? हम लोग बलूचिस्तानी नाम की कोई जुबान नहीं है, you know. There's a lot of people who don't understand because we don't have interactions. People don't travel. People tend to go outside more, those who can afford it. But Balochistan, I always say I'm not the smartest of people from Balochistan who made it to the US or to American institutions. बहुत सारे लोग हैं मेरे. I mean, when I look at it from my school time, from my college time, from my university time, there were always better people, more smarter people. And I think what was missing was lack of guidance. Guidance की बहुत कमी है बलूचिस्तान में. जो नौजवान है, everybody is like sort of a self-made person. मैं बलूचिस्तान पे बहुत लिखता हूँ, and one of the fancy words that I always use and others use is the middle class. क्योंकि बलूचिस्तान में इतने सारे वो इतना बड़ा ट्राइबल सिस्टम है कि सेल्फ मेड लोग बहुत कम हैं, और जो हैं, you know, you have to applaud them. कि अब I come from a family where my mom and dad, they are both illiterate. They're absolutely illiterate. They never went to any school. So when you start life, you know, then it's a challenge. Where do you go from there? How do you start school? What do you study? Who helps you with the homework? So ये बहुत सारे problems हैं. But when you zoom out, when you look at Balochistan, इन तमाम हालात के बावजूद बलूचिस्तान में इतने सारे लोग प्रोड्यूस हुए हैं पिछले 20 सालों में. बलूचिस्तान के बारे में जब भी रिपोर्टिंग होती है, there's this Harvard scholar called Stephen Pinker who talks about how the media depicts the negative side of things a lot. The positive side of it is like कि पिछले 20 सालों में जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है. I would give you one example of women's education in Balochistan, for example. मैंने कहा कि मेरी वालदा illiterate है, but in 20 years fast forward, when I look at my family, there are like maybe 20-30 women in my family who all have master's degrees. इधर अमेरिका में it's a big deal. आपके वालिद स्कूल नहीं गए तो अगर आप कॉलेज जाते हैं तो it's a big deal, it's a big jump. कि इतने बड़ा सफर को तय करने में आपको 5-10 साल लगते हैं. बट बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आज जब हम देखते हैं कि इतनी सारी खवातीन, एंड दिस इज नॉट माय फैमिली स्टोरी ओनली, अगर आप अपने फैमिली में देख लें, मच में जितने आपके जानने वाले लोग हैं, क्वेटा में आप देखें, तो पिछले 20 सालों में बहुत सारी खवातीन हमारी एजुकेट हुई हैं. दे आर एम्प्लॉयड, you know, that means they're breadwinners in the family. So there's this wonderful story out of Balochistan that's never told, how education has empowered people, people who have struggled from different parts, you know, no matter where they come from, Panjgur ho, Turbat ho. And one of the things that I think I would always give credit is to these language institutions. Because, you know, people take it for granted. Agar aap Islamabad, Lahore se hain, to it's relatively easier. But in Balochistan, as I said, first and foremost is there's no mentorship, there's no guidance. लोगों को पता नहीं होता कि like where to go, which way to go. तो language institutions ने एक तरह से दरवाजे खोले हैं नौजवानों के लिए कि they read magazines, newspapers, they see what else is possible. So then they appear in competitive examinations. And so a lot of young people, when you talk to them, their father was illiterate. अब वो bureaucrats बन गए हैं, वो you know, public service commission के through या CSS करके आ जाते हैं, lecturers बन के आ जाते हैं. So it's a big change in a society के इस change को अमूमन 50-60 साल लगते हैं किसी society में. But in Balochistan there's a tremendous change. You know, when I look at the Facebook feed of my students, even जिन लोगों को मैंने 10-15 साल पढ़ाया था, they're doctors and engineers. But you know, the challenge is it's all self-made people. People have to struggle by themselves. There's no mentorship. But I don't think that, you know, that people outside Balochistan know much about Balochistan. कि कितना बड़ा culture है. You go to these libraries. You know, when I was even in Balochistan, you go to the, you know, public libraries in the University of Balochistan. You can't find a seat. जहाँ पे बैठने को जगह हो. And in the same way, in the older days when people used to read, you know, print newspapers, you would go to the stall और उस दिन का अखबार आपको नहीं मिलता था क्योंकि लोग खरीद के पढ़ लेते हैं अखबार. So Balochistan does have a very vibrant culture, and
There are a lot of And educated people. politically it's a very vibrant society. आप मतलब हमें याद है हमारी कॉलेज लाइफ में, तो खैर हमने अटेंड नहीं किए, लेकिन क्योंकि कॉलेज में हम वो स्कूल से एकदम जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कुएं से वो एक थोड़ी सी बड़ी झील होती है, तो हम तो वो झील एक्सप्लोर कर रहे थे. But in university days and in back in school days, the political debate was there among the students. और फिर जो यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिकल सर्कल होता था, चाहे वो बीएसओ का हो, चाहे वो पीएसओ का हो, पीएसएफ का हो, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो पॉलिटिकल सर्कल होते थे, उनमें जो डिबेट होती थी, पॉलिटिकल डिबेट होती थी, वो बहुत वाइब्रेंट होती थी. वो ग्लोबल सूरत हाल को, हालांकि आई एम टॉकिंग about back in 90s, when जी there was no internet, when there was no connectivity, it was not, the global village was kind of, it was, ये it was बन रहा predicted था. at that हाँ time. हाँ. It was but today we do live in a global village. या तो उस वक्त भी जो पॉलिटिकल पॉल फ्रेरे की बात की जाती थी, आप देखें आईडीएसपी ने जो काम उस वक्त किया, डॉक्टर कुर्रत बिल्कुल वगैरह ने, शाहजहां बादीनी वगैरह ने जो काम उस वक्त किया, और अच्छा जिना रोड के जो थड़े थे उन पे जो गप होती थी, उसका जो लेवल होता था, अब तो सही हम, वो कई दफा मैं कहता हूँ, वो मामा याज जो फतवे वहां थड़ों पे बैठ के जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स किया करता था, अब अगर वो कहीं सोशल मीडिया पे आए तो उस पे तो 295 सी के पर्चे हो जाएं. सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव होती जा रही है पाकिस्तान में, और मुझे ये लगता है कि यहाँ एक एक बिल्कुल अलग सूरत हाल है. बलूचिस्तान में जितनी ज्यादा पोलिटिसाइजेशन होती जा रही है, वो अच्छे बुरे वक्त से गुजरने के बाद जितना पॉलिटिकल मेच्योरिटी की तरफ चलना शुरू हो रहे हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी जो है वो स्पेस क्लेम करती जा रही है ज्यादा से ज्यादा. That's very true and that's a tragedy कि पाकिस्तान में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं but when you look at the conspiracy यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ लिख के निकलते हैं उसके बावजूद वो एक ही नैरेटिव को फॉलो करते हैं. वो जो स्टेट नैरेटिव है, जो उसमें जाहिर सी बात है बहुत एग्जैजरेशंस भी हैं, बहुत सारा झूठ भी होता है. और आई मीन द एबिलिटी टू क्वेश्चन the narratives, the ability to question the status quo. It's very important. जब मैं बलूच सर्कल्स में बात करता हूँ तो हमारे बलूच दोस्त कभी कभार गिला करते हैं, या they wish कि सारे बलूच एक होते हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी सारी तंजीमें. बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान कि एक ही सूबे में एक ही इशू पे इतनी सारी तंजीमें हैं. एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली. बीएनपी इज वन पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस द नेशनल पार्टी, और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी इन इश्यूज पे डिबेट करते गुजारते हैं कि भी बलूचिस्तान में सरदारी निजाम होना चाहिए या नहीं, क्या बलूचों को पार्लियामेंट्री सियासत में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एंड our people sometimes take them for granted. The part of life. But when you step outside Balochistan, you would see, even in America, यहाँ पे America में, sometimes I feel very frustrated when I look at the system. There's the Democratic Party, there's the Republican Party. You're either liberal or conservative. But Balochistan is a society में आप देखते हैं कि there are so many shades, there are so many layers of opinion. There are people who have very extreme opinions. There are people who have completely different opinions, and you get surprised that how people develop these opinions. And it's not as if that you keep sustain these narratives without studying. You have to constantly study. You have to read books. You have to engage in dialogue with people. And that's what I think in the level of dialogue in Balochistan is significantly matured. जो नेशनल पार्टी के लोग हैं, जो बीएनपी के लोग हैं, जो बीएनएम के लोग हैं, they all read literature. They all have their reference points. And there's constantly a scholarship in these areas. You look at all these newspapers published from Balochistan, there's constant debate, which is a very good thing. Nobody is above the law, or nobody's above the discussion कि भाई फलां बंदे ने बात की थी तो this is the हर पे आखिर. लोग अख्तर मेंगल पे सवाल करते हैं, लोग डॉक्टर मालिक पे सवाल करते हैं. And temporarily, people do get offended कि भाई फलां बंदे ने सवाल किया है. But then overall, जब 20, 25, 30 साल गुजर जाते हैं, you see like the society feels that this is natural. This is natural. You can ask questions. You can think about future. कि भाई अगर
इवन जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, अगर आप कल को आज़ाद होंगे तो बलूचिस्तान में ट्राइबल सिस्टम की क्या गुंजाइश होगी, लैंड रिफॉर्म्स आप कैसे करेंगे, खवातीन का क्या रोल होगा बलूच सोसाइटी में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बलूचिस्तान में you find them. Similarly, then you step back, you look at the Pashtun nationalists. Pashtun nationalists में भी वही situation है, there is a division within the society. कुछ लोग मजहबी हैं, कुछ लोग liberal हैं, कुछ लोग liberal ultra liberal हैं in the sense कि वो PTM को support करते हैं. But this is all done in a very शाइस्ता manner, in a very civilized manner. कि लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं. So I think this is the beauty of Balochistan. Then you step to the next level, you see the Hazara tribe in Balochistan. They also have their own, beauty in terms of being a diverse community. हमारे यहाँ लोग बहुत simply कहते हैं कि बलूचिस्तान, it's one word, Balochistan, it's one society, but it's not. Or Baloch nationalists. If you zoom in, you just keep going. आपको 10-15 ऐसे groups या तंजीमें मिल जाती हैं जो separatists हैं, but they don't agree with each other. They constantly debate each other. They constantly hold each other accountable. Then the moderate Baloch nationalists, जो pro-establishment है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ हो गई. तो this is what people have to understand, that Balochistan is intellectually very, very diverse. People have different opinions, and this is not only one narrative. I think it just constantly keeps changing. लोग एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते हैं, and unfortunately हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से हालात खराब हो गए हैं. You certainly understand. People take the space is shrunk. The space to have a different opinion has shrunk, and that's dangerous for the society as a whole. I think we have to step back. जो जिस ज़माने में हमारी मुलाकात हुई थी, आप 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं, Balochistan was a beautiful place. Now, when I am Still like, it is. In the sense like the cultural diversity, we have to take advantage of it, and we do. I think a lot of times we do take advantage of it. But जो Balochistan की security की situation है, उसकी वजह से it has been paused. कि अगर आपकी सियासी राय मुख्तलिफ है, अगर आपकी मजहबी राय मुख्तलिफ है, तो लोग समझते हैं कि आप मुल्क दुश्मन हो गए, आप फलां के एजेंट हो गए. You don't have to be somebody's agent to have a different opinion. अगर मेरी राय आपकी राय से मुख्तलिफ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं रॉ का एजेंट हूँ या मूसाद का एजेंट हूँ या अफगान का एजेंट हूँ. It's simply you and I have a different opinion. And you can have a difference of opinion on sports, on food, on anything. So that space needs to be reclaimed, and unfortunately in Pakistan, there is this persistent effort कि सबको मजबूर किया जाए कि सबकी राय एक जैसी हो, सब मजहब के मामले में एक ही फिरके को फॉलो करें और या politically एक ही opinion को follow करें, which is not good for any society. I think you need all these shades of different opinions. I agree. And आपने मुझे याद दिला दिया, I was the part of that whole process when BNM and BNM Dr. Hai और PNP का merger हुआ and National Party बनी. I was the first organizer of National Party in my तहसील much. लेकिन जो उस वक्त एक चीज हुई, वो चेयरमैन गुलाम मोहम्मद ने जब BNM बनाई और उसने कहा कि मैंने पार्लिमानी सियासत नहीं करनी. अब ये जो पॉलिटिकल इंटेलेक्ट है, ये आपको अब भी 20 साल 25 साल बाद भी इस पूरे खित्ते में शायद ही कहीं दिखाई देता है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल लेकिन पार्लिमानी सियासत से अलग होगी. ये आपको आज भी दिखाई नहीं देता. बहुत से लोगों को मैंने देखा वो पीटीएम को रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल पीटीएम हैज इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान. उनके दो एमएनएस. I think that's one point. Sorry for the interruption, but I try to constantly make with my Pakistani colleagues or colleagues outside Balochistan that the BNM or the BSO Azad, they are political entities. No matter what their opinion is, they don't engage in armed struggle. वो मुसल्लह तंजीमें नहीं हैं. You can't lump them all into the same. जिस तरह गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट वो पाबंदी लगाई है, आप BLA और BNM को एक साथ नहीं देख सकते. They might have ideological similarities,
लेकिन जब तक एक बंदे ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, जब तक उसने बंदूक नहीं उठाई है, और जब तक उसने सियासी विरोध में हिस्सा नहीं लिया है, unless you have a case against that person, you can't say that person is a terrorist. You have to understand that that person has an extreme opinion, obviously, as compared to the status quo, as compared to the general opinion. But that doesn't mean that गुलाम मोहम्मद हो गए, या अब जो चेयरमैन खलील है, ये बहुत सारे लोग जो BNM के हैं, you know, that's very important. These guys, they have drastic differences with the mainstream Baloch political parties. But this is all based on ideology, based on opinion, based on strategy. और जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनका रास्ता बिल्कुल अलग है, वो अपने काम में लगे होते हैं, उनके जो लिटरेचर है that's different. But BSO Azad, for example, is one organization that's very active in Balochistan University. जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख के आ जाते हैं, और they evolve. One thing that we don't talk much about in Pakistan is evolution, how people's thoughts evolve. अगर 10-15 साल पहले मेरी जो राय थी मुख्तलिफ इश्यूज पे, वो जरूरी नहीं कि आज वही राय हो. हमारे यहाँ people feel bad कि भाई आपकी राय अब मुख्तलिफ हो गई है. उसकी वजह ये है कि I'm physically grown, I'm a different person. In terms of my exposure, I'm a different person. In terms of reading, I'm a different person. In terms of interactions, तो लोग चेंज हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं. तो जो नौजवान इंटीरियर बलूचिस्तान से आ जाते हैं क्वेटा, देयर होराइजन एक्सपैंड्स. और वो अगर पंजगूर में आप होते हैं, आपसे पंजगूर में बलूची स्पीकिंग पंजगूरियों से आपका इंटरेक्शन होता है. व्हेन यू कम टू क्वेटा, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे यू मीट पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिनका मजहब मुख्तलिफ है, जिनका फिरका मुख्तलिफ है, जिनका बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, whose social economic status is different, and you find it like initially discomforting कि लोग आपको चैलेंज करेंगे जिन जिन चीजों को आप अपने इलाके में फैक्ट समझते थे. जब आप क्वेटा आते हैं तो दे बिकम opinions. People question you, जिस लीडर को आप बहुत खुदा समझते थे, यहाँ पे क्वेटा में आपकी मुलाकात होती है लोगों से जो सवाल करते हैं कि भाई इस लीडर ने तो फिलहाल पॉलिसी पे इनकी ये राय है. Then you evolve, you begin to raise questions, you read more, you read the history, you interact with people. कि भाई अगर मेरा लीडर गलत है तो who is the right leader? What are the other options? And in the same way as you get out of Quetta, you go to Islamabad, you get to see a bigger picture of Pakistan. And you zoom out, you go to like at the Asian level, South Asia level, so your horizon expands. And when you are at a place like the US, यहाँ पे, when we are in a cafeteria, you see people from 100 different countries, 100 different cultures. And so your thoughts change. And that's what happens in Balochistan. कि बहुत सारे नौजवान जो हैं, जो गांव से निकल के क्वेटा आ जाते हैं, BSO के स्टडी सर्कल्स का हिस्सा बनते हैं, they get to know more about their history, culture, and when they see pessimism, when they see the state not fulfilling the promise, then there is an angrier version of those young people. They are like, we want outright independence. But ऐसा नहीं है कि they get a blank check. Baloch society में मुझे पता है कि I've been writing about it for so long. सिर्फ ये कहना आसान नहीं कि भी आप आजाद बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं. There are always people who will ask you questions. What's your strategy? Who is your leader? How do you intend to go about it? So within the Baluch circles, within the Baluch media, there are all these debates. There are questions. वो कोई article लिखता है तो उसका कोई rebuttal आ जाता है. There is like sometimes people go back and forth, and that's the beauty of it. I don't think the BNM have a blank check कि वो जो कहें लोग उनको agree करें. बहुत सारे लोग हैं, you have the BNM, then you have the National Party. Dr. Malik और उनकी पार्टी का मौका भी है कि भाई we need infrastructure, लोगों को पहले पढ़ लिखना चाहिए, लोगों को we need to have representation. And similarly, Mengal has a different approach. But this is like, what we see in the media is the final product. But before the final product comes in, there's a lot of internal debate. लोग बहस बहुत करते हैं, there is like WhatsApp groups, there is Facebook. But at the end of the day, this is a constant thing. That's why you see there were times when the National Party boycotted the elections in 2002, and the BNP, 2008, I think, after Nawab Bukti's killing. Then there was the Mengal party, the BNP, agreeing to boycott the elections. लेकिन वक्त गुजरने के बाद उनको एहसास हो गया, नेशनल पार्टी वाले, they were the first ones to realize that they need representation in the parliament.
उसके बाद Mengal wale, they also realized, and in the same way, it's evolution. You know, your opinions change. You think about one thing right now, that's a fact, that's a decision, but fast forward, you get more evidence, you get more interactions, you get discussions, and as a result of all that, you make a different decision. So that's very important as a part of any society. एंड इवन इन नेशनल पार्टी अगर आप देखें तो असलम बुलेदी हो या कशकोल अली हो, तो ये बिल्कुल एक अलग अपनी पार्टी के अंदर इनके जो डिबेट चलती है वो बड़ी हेल्दी होती है. एंड आई एम जस्ट शेयरिंग अ जोक विद यू. मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था जिनका बहुत ज्यादा गुमान था कि वो चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं और उसके बारे में उनकी राय बड़ी मुस्तनद है. तो वो आधे पौने घंटे में जब वो अपना नैरेटिव मेरे सामने वो पूरा केस बिल्ड करते रहे, और तो वो मुसलसल लफ्ज बलोची इस्तेमाल करते रहे. तो जब उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अभी तक आपको ये नहीं पता कि वहां रहने वाले या वहां स्ट्रगल करने वाले या वहां वहां पे जो लोग नाराज हैं वो बलोची नहीं, वो बलोच हैं. आप आज भी उन्हें यू आर कॉलिंग देम बलोचीज, यू आर नॉट कॉलिंग देम बलोच. तो इसका मतलब है कि आपकी जो उनके बारे में मालूमात है वो इंतहाई सतही है, और मुझे नहीं लगता कि ये मालूमात किसी तौर पे भी किसी के लिए भी कारामद साबित हो सकती है. अच्छा, लेट्स गेट बैक टू पंजगुर ब्रदर अगेन. जी. ये पढ़ने पढ़ाने वाला दुबला पतला सा नौजवान ये सहाफी कैसे बना? ये लाइन कैसे चुनी आपने? Good question. I think I have a very straightforward answer for that. A library. There was a small library in our town. That was so instrumental in my life. Two places. One was the cricket club. One was the library. Cricket club taught me, diversity, reaching out to people from other towns. But the library was very instrumental. मेरे अंकल हैं मलिक मकबूल साहब जो वहाँ पे, I think he's at Darul School. They had set up a library, and I applaud their vision कि उस जमाने में भी लोगों की ये सोच थी कि भाई लोग जो नौजवान हैं उनको एंगेज करने के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए. तो लाइब्रेरी वाज फुल ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज, आंख मचोली एंड बच्चों का अखबार फ्रॉम ऑल दोस टाइम्स, टूट बटूट. I developed an interest in reading, and from all these magazines, children's magazines and stories. As I grew older, I saw a lot of good writers were journalists. Akhlaq Ahmad, for example. So these people had a background in journalism. Then बलूचिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे BBC उर्दू ना सुनी जाए. लोग सुनते हैं BBC उर्दू, और मेरे वाले साहब और मेरे ग्रैंडफादर वो BBC उर्दू बहुत सुनते थे. And there was a time, like every time when you listen to the BBC, जब एक खबर आती है उसके बाद एक तज्जिया निगार से वो पूछते हैं. तो when I was younger, I would very naively ask, अब वो गए उन्होंने yes की वजूहात क्या है, क्या like, and my dad would glorify these analysts, which I happen to be now. It's flattering. But at that time मेरे वालिद साहब ही कहते थे कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, ये जर्नलिस्ट्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बहुत पढ़ लिख के जब आते हैं तो उनको सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को पता होता है. So I think the BBC inspired me the most. I wanted to become a journalist at that time because of the BBC. I wanted to, and writing. I mean, books have always been with me from childhood. And honestly, when I zoom out, I identify as a very liberal person. But I applaud Pakistani conservative entities, जो भी हों, जो मजहबी जमातें हैं, जो राइट का जो सेक्शन है, उन्होंने लिटरेचर में बहुत काम किया है. I mean, I'm not religious anymore. I'm very liberal. But जो दावा अकेडमी है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में इस्लामिक नेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने बच्चों के अदब में बहुत काम किया है, बच्चों को पढ़ाने में. और जो लिबरल्स हैं वो बहुत बहुत लेट आते हैं पाकिस्तान में इस गेम में कि आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को प्रिपेयर करें पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, जनरल नॉलेज के हिसाब से. मैं कहता हूँ पाकिस्तान, I mean, it's a state that supports, religion.
But at the same time, जो non-government entities हैं, they're very effective. चाहे जमात इस्लामी हो, so I read a lot of literature, which was all right-wing literature that came from those institutions. But at that time, there wasn't such a big effort to indoctrinate. When you grow older, you get to unpack a lot of things. You can sift between the good and the bad and what is acceptable, what is unacceptable. But I really am so thankful कि मुझे मौका मिला कि मैं इन तमाम राइटर्स को पढूं, जो मैगजीन्स हैं, आंख मचोली, फूल, and all these magazines. They instilled a sense of reading, a passion for reading. कि 120 पेज का जो मैगजीन है वो मैं एक दिन में पढ़ लेता था. उमर यार की कहानियां, टार्जन की कहानियां, इमरान सीरीज, and this all went on. So my instructor Sir Zahir Hussain, जो उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई, तो एक दिन उन्होंने मुझे, he got the word, he knew that I was reading a lot. He told me, he's like, तुम अंग्रेजी में पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर दे, तुम अंग्रेजी में लिखो, तुम अगर लिखना चाहते हो तो अंग्रेजी में लिखो. And I was like, what's the point, what's the difference? He said, when you write in English, when you read in English, you, as like पहले हमने बात की कि your horizon would expand. आपको पूरी दुनिया में लोग पढ़ सकते हैं, आप पूरी दुनिया के लिए लिख सकते हैं. इस वक्त अगर आप उर्दू में लिखेंगे, सिर्फ आप पाकिस्तान के लिए लिख सकते हैं, पाकिस्तानियों को आप समझ सकते हैं. अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो it just broadens the whole horizon. And that's when I began to write in English, and I had no role models. I remember one story that I keep mentioning all the time. Pakistan mein log, they want to become doctors and engineers. I was in my first year chemistry class when my teacher asked me something, and I didn't have an answer. And he was like, अगर तुम्हें ये पता नहीं तो तुम कैसे डॉक्टर बनोगे? And I remember I told him, sir, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे जर्नलिस्ट बनना है. And after the class, a lot of my friends came out to me. They were like, what was that thing you said you wanted to become? Because Panjgur mein, there was no journalist at that time, like a professional journalist or somebody who could make a living out of journalism. For me, when I looked for, when I scanned for ideals, Siddiq Baluch popped up. Marhum Siddiq Baluch, jo Balochistan Express or Azadi ke editor. And I reached out to him. I was like, I want to become a journalist. And he was very kind. He was very helpful. He was like, why don't you write for us? So I would write, deadlines from Panjgur for Balochistan Express. They were extremely helpful in terms of shaping me as the person or journalist that I am. And then बहुत शौक था, it's like अखबारात के कटिंग्स लेना और like शाहजहां के columns पढ़ना, बार पढ़ना. When you tell a younger person to become a good journalist, you have to read. And by the way, sorry to interrupt, Siraj. Was it not the time when Asap came and Manzoor Baloch entered in the market? Because I think that was a little later. Manzoor was a real change, right? Asap and Manzoor. So yes, around that time, I started my reporting career with Kohistan. If you remember, Roznama Kohistan hota tha Quetta mein, very competitive with Mashriq and Jang. So मैं कोहिस्तान का correspondent था पंजगुर में. That was 1999. I was 16 years old. And then from there I went to Quetta. But after that I started in English journalism. I went to Quetta for the university, and that was that. उससे पहले yes, ASAP was launched. ASAP, इंतखाब और आज़ादी, ये तीन जो अखबारात हैं, इनका बड़ा रोल है बलूचिस्तान के जर्नलिज्म. In the sense that बाकी जो बड़े अखबारात हैं वो बलूचिस्तान में होते हैं, वो इश्तिहारात के लिए होते हैं. Like जंग, मशरिक, नवाए वक्त, even डॉन का डमी पेपर छपता है क्वेटा से. They are out there for advertisements. उनका जो इदारियती सफ़ा है, editorial page, वो वहाँ से बन के आता है. उनके जो front pages हैं वो बाहर से बन के आ जाते हैं. इंतखाब अखबार ने लिबरलाइज किया, एक इनकलाब बर्पा किया बलूचिस्तान में कि जहां आप मकामी आपकी खबरें हैं वो फ्रंट पेज पे आ सकती थी. बलूचिस्तान का नौजवान लड़का लिख सकता था वहां पे. सो जब इंतखाब ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस किया कि मकामी लोग मकामी इश्यूज पे कॉलम्स लिख सकते थे, तो द अदर्स हैड टू ओपन अप एज वेल. मंजूर केम विद हिज कॉलम गिदान इन मशरिक. तो लोग they had to create space. आज जो आप देख सकते हैं, अगर जंग, मशरिक, एक्सप्रेस वगैरह में बलूच जर्नलिस्ट्स हैं, it is not always been the case. बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को टफ टाइम देना पड़ा. And then ASAP took a step further कि वो आपको लिखने का मुआवजा देते थे.
I remember they gave me like 200 rupees. I was like, that's a big deal. So ASAP produced a big camp of journalists. आज जो जितने नौजवान लिखने वाले हैं बलूचिस्तान में या हम जैसे लोग जो अब इतने नौजवान भी नहीं रहे हम सारे लोग आसाप की प्रोडक्शन है कि मैंने उर्दू में उनके लिए कॉलम लिखा I mean, they would make you feel important. They wouldn't interfere as much as you would expect. There I was remember zero censorship zero policy. censorship. Yeah. They would let you write. अब जाहिर सी बात है अगर मैं अपने 15-20 साल पहले के कॉलम्स पढ़ता हूँ तो मुझे शर्म आती है ना बहुत सारी चीज़ों पे my thoughts have changed, my grammar has improved or like writing style has changed. लेकिन उन्होंने encourage किया कि लोग लिखें, लोग मुस्तकिल मिजाजी से लिखें, लोग मुख्तलिफ इश्यूज पे लिखें, and that helped a lot. अब आसाप से बहुत सारे journalists निकल आए. English शोबा जो है English journalism का it was still there was one man show I would say बलूचिस्तान का अगर एक ही अंग्रेजी जर्नलिस्ट थे तो वो सिद्दीक बलोच साहब थे. was very authentic. बाकी रिपोर्टर्स थे बहुत सारे मेरे काबिल एहतराम साथी हैं जिन्होंने बाकी अखबारात के लिए काम किया but सिद्दीक बलोच was a machine. he was a journalistic machine कि वो besides that he was so Siddiq Baloch was such a role model for me. I can't tell you enough. He epitomized a journalist, in terms of interactions. He was very good with his interactions with people. And that's one of the things I think I personally see. I wish I had his qualities कि वो किस तरह context रखते थे लोगों के साथ. सुबह वो ISPR को फोन करते थे, डायरेक्ट DPR को फोन करते थे और सदर अताउल्लाह मेंगल को फोन करते थे. And you would get surprised कि एक बंदा तमाम जो मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग हैं उनके साथ यकसा कैसे अपने कॉन्टेक्स्ट रख सकते हैं. बलूचिस्तान में रहना सर्वाइव करना चलना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. देखिए I couldn't, right? I left Balochistan in my 20s. Siddiq Baloch left it until his 80s and 90s. And it's a skill. It's a big skill how you work with all stakeholders, all political opinions. So when I went to quite press, Siddiq Baloch hired me as a reporter. And in the meanwhile, I again, the reason that I mentioned Siddiq Baloch so much in my lifetime, because so Siddiq Baloch used to work for Dawn. तकरीबन 30 साल तक वो Dawn के साथ रहे कराची में. So एक दिन he got a call from somebody at Herald, which is the magazine that Dawn used to publish. तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए इलेक्शन कवरेज पे कुछ लिखें. तो सिद्दीक बलोच ने मुझे ऐसे इशारा किया कि वो फोन पे थे कि खड़े रहो कम है. तो वो कहने लगे कि भाई मैं आपको एक और नौजवान सहाफ़ी से इंट्रोड्यूस करूंगा जो मुझसे बेहतर लिख सकते हैं. And I knew कि वो जानबूझ के मुझे आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं. It was his greatness. उन्होंने कहा नहीं मैं एक और नौजवान है वो मुझसे बेहतर लिख सकते हैं. And I was like honestly at that time I wasn't so good or being able to read Herald. Herald was a very standard publication. I was like मैं Herald के लिए कैसे लिख सकता हूँ. सिद्दीक साहब and then in a similar situation जब Voice of America वालों ने उन्हें कॉल की कि भी आप फलां इशू पे तज्जिया करें तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझसे बेहतर एनालिस्ट हैं आप उनसे बात करें. तो Siddiq was a role model, which is what then going forward I try to help a lot of young journalists क्योंकि लोगों ने मुझ पे एहसानात बहुत किए हैं. सिद्दीक बलोच जैसे साथियों ने बहुत सारे एहसानात किए हैं और जैसे it takes a whole village to raise a child. I am not the product of myself only. बहुत सारे लोगों ने मुझ पे काम किया है. बहुत सारे लोगों ने जैसे सिद्दीक बलोच ने खुद स्टेप बैक करके मुझे आगे किया. So I got to write for Herald, which was a big deal. और एक दिन पर एडिटर से बात हुई तो लापता अफराद का मामला आ गया. एम इलियास खान होते थे उस वक्त हेरल्ड में और उन्होंने कहा कि that's a big story, let's do a cover story. And Siraj read how can I write the cover story for Herald, but he encouraged me. So Ilyas Sahab was extremely helpful. I wrote for Herald. We did a cover story on the disappeared people in Balochistan. I think it was one of the first times when the issue was highlighted on a very large scale. And then in the meanwhile, I got a scholarship to go to India. It's just a coincidence, but it is stuck with me all the time. Baluch kaise India chala gaya. But I got a scholarship. I went to India. So on that selection committee, which picked me up,
Najam Sethi was one of the selectors, and Salima Hashmi, Faiz साहब की जो बेटी हैं. Sorry to interrupt. Are you saying that Najam Sethi was one of the selectors? That's right, yes. So there is this Do organization you called know what South it Asia means? Foundation. What it reflects nowadays in Pakistan? I'm talking about 2006. Okay, then 2006. then there was no selectors term in those days. Exactly, no PCB involved at that time. There was I hadn't met Najam Sethi at all at that time. Okay. Those are पांच की बात है तो there's this organization called South Asia Foundation which awards scholarships to all 7 South Asian countries जहाँ से like people from elsewhere in South Asia come to Pakistan in NCA, the National College of Arts. तो इंडिया वाले जर्नलिस्ट को होस्ट करते हैं, then other disciplines में श्रीलंका लोग जाते हैं. So I got accepted for that scholarship in 2005 when I was working for Balochistan Express and Herald, and I went there. I completed my postgrad in journalism, French journalism. So when I was coming back, I wrote to Najam Sethi just informing him. Oh no, actually, it was the dean of the school who had gone to Lahore, and he had said good things about me in Lahore, that I was doing well with my studies. And then, so Najam wrote back to me, and he said, I would like to offer you to work for me as the bureau chief of the Daily Times and the Friday Times in Balochistan. That was a big jump for me, both in terms of Siddiq Baluch was paying me like 5,000 rupees and Najam was offering me like 20,000 rupees. It was a big jump for a fresh graduate working as a reporter versus working as the bureau chief. But it was a very difficult time at the same time. Remember, Bukti was killed in 2006. So I landed in Balochistan in 2006 and started reporting. It was the time when, there wasn't much reporting on Balochistan. It was an opportunity for me. I wrote stories every day, like 3, 4, 5, 6 stories, sometimes 3 or 4 stories on the front page. No. A lot of attention to the national press. And I remember at one time when one of the news editors telling me that Najam has said that Siraj ke bylines band kar do. Don't give him so many bylines, because I think Najam was aware when he came back, he asked like how I was doing. I was like, I've written 45 stories for the Daily Times. These are the bylines. So, I mean, that was a good exposure. That was a good timing as well. But at the same time, I had the opportunity to interview the governor of Balochistan, Awais Ahmed Ghani, at that time, corps commander, the IGFC, and Baluch nationalists from Nawab Akbar Bukti to Sardar Atala Mengal to Nawab Khair Bakhsh Mari, and much later to Bramdak Bukti. So I got to interview all these people. It was a great opportunity, and that's how I began to work on as a journalist. There was a lot of opportunity at that time. Again, there wasn't a lot of guidance except for Siddiq Baluch, who mentored me, who helped me a lot in navigating my work. But then that attention somehow turned against me, because people were like, because I was highlighting all these issues of disappearances and separatist movement going on. And that was one thing you wouldn't see in many other newspapers in Pakistan. And that unfortunately drew attention. I was summoned by certain institutions, which better. It's better for us to stop it there. तो हाँ, लोग वो मुझे कहने लगे कि भाई तुम अकबर बुक्टी के खिलाफ क्यों नहीं लिखते? I was summoned by one intelligence agency. It's interesting that you mention ASAP, क्योंकि जब मैं उनके ऑफिस गया क्वेटा छावनी में, तो उनके सामने रोजनामा इंतखाब, आज़ादी और आसाब के अखबारात पड़े हुए थे, and they were highlighted certain stories. सिद्दीक बलोच को पैसे कौन देता है? I'm like, how would I know सिद्दीक बलोच को पैसे कौन देता है, अनवर साजिदी को पैसे कौन देता है, ये अखबारात कहाँ से चलाते हैं? So और या आप ये स्टोरी लिख के देते हैं, and I'm just like, it doesn't work that way. I'm a journalist, and I have a responsibility. I do everybody's perspective. Governor साहब का interview कर लिया, फलां का कर लिया. That's how I work. I can't be a spokesperson. But as time moved forward, the conflict in Balochistan began to engulf all unarmed stakeholders, in the sense that not only journalists पे बात इसलिए बहुत होती है क्योंकि हम लोग अपने पे खुद स्टोरीज लिखते हैं,
प्रेस फ्रीडम पे हम बड़ा वो शोर शराबा करते हैं, बट बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके लिए भी घेराव बहुत तंग हो गया, राइट्स एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, एक्टिविस्ट, जितने लोग जो हैं बलूचिस्तान में जो बाशऊर लोग हैं, जो those who can differentiate between good and bad, those who call it out, उन सब के लिए मसाइल क्रिएट हो गए, बहुत सारे लोग मार दिए गए, बहुत सारे लोग लापता हुए, and that is when a generation of young Baluch journalists and writers and activists they began to leave Balochistan, and as you again look at it, आपको बेहतर पता होगा, बलूचिस्तान में रहे हैं, क्वेटा में रहे हैं, कि different people suffered in different ways. Yeah. It wasn't that the Baluch suffered only. I would always want to correct the history. कि जो आबादकार हैं, जो पंजाबी सेटलर्स हैं, उन पे भी बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारे पंजाबी प्रोफेशनल्स थे. They had nowhere else to go. क्या बलूचिस्तान से निकल जाएं? भैया बलूचिस्तान से निकल लेंगे तो कहाँ जाएंगे? These were people who were born in Balochistan. That I've kept on writing about it, but I think that was the ugliest phase of Balochistan. The conflict got so dirty, so nasty, कि आपने लोगों को मजबूर किया कि बलूचिस्तान से निकल जाएंगे, बट लोकल बलूची और ब्रावी और पश्तो, बट they're from there. बहुत सारे सेटलर्स क्वेटा में मुझसे पहले गए थे. I went from पंजगुट to क्वेटा. अब मैं अगर क्वेटा के किसी सईद हाशमी को आप वहां से उठा के उकाड़ा भेज दें तो सईद हाशमी तो काउंसलर नहीं बनेगा. Absolutely. I think this is one thing I think Baluch nationalists have to improvise on. It's always difficult to get feedback, but Baluch nationalists have to understand that diversity is important. कि जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी जुबान बोले, हर कोई आपकी सियासी सोच से इत्तेफाक करे. क्वेटा इज अ वेरी डाइवर्स प्लेस. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका फिरका मुख्तलिफ है, जिनकी जुबान मुख्तलिफ है, and that is what I think is the stumbling block in Balochistan. That's where things have gone wrong. A lot of miscommunication कि भाई अगर आप बलोच नहीं है, पश्तून नहीं है, तो आप यहाँ belong नहीं करते. And that is so unfortunate, because जो यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान के बहुत सारे काबिल प्रोफेसर्स थे, सारे निकल के चले गए. अब जब बलूचों से मेरी बात होती है, they make a bunch of excuses. नहीं, वो ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, वो रियल एस्टेट एजेंसी वालों ने उनको धमकी दी कि आप चले जाएं, आप अपना घर खाली करें. वे 70s में सरदार अताउल्लाह मेंगल के जमाने में क्या हुआ, फिर they're like, let's fix the history. आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, आपको पता नहीं था. I'm like, I wasn't born when Ataullah Mengel's government, forced the Punjabi teachers out of Balochistan. But 2000 में तो हमने अपनी आंखों से देखा. I mean, Miss Nazma Taleb was my teacher. मैं यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में उनका स्टूडेंट रहा हूँ. She was killed. And what kind of nationalism is all this? So this is, when you fix all these problems, when you acknowledge these problems, that helps. It helps in improving your nationalist movement. आप अपनी गलतियों को acknowledge करें, आप अपनी गलतियों को rectify करें, and then move forward from there. But what happened? So जो हज़ारा ट्राइब के लोग हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट पोजीशंस पे थे, गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से गवर्नमेंट उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी. बहुत सारे अब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, बहुत सारे इधर अमेरिका में हैं, बहुत यूके चले गए हैं. ये सारे वही लोग थे जो बलूचिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तालीमी लिहाज से, एजुकेशन के वो बाकी शोबेजात में कंट्रीब्यूट कर रहे थे. तो सब के सब एक तरह से there's a generation of displaced people from Balochistan outside Balochistan, and that's very unfortunate. बिल्कुल ऐसा. अच्छा, अब ये बताइए कि वहां से इतना बड़ा फैसला इतनी छोटी सी उम्र में अपना वतन छोड़ने का, अपना घर छोड़ने का, अपने अजीज छोड़ने का, रिश्तेदार छोड़ने का, आई गेस अब आपके 11-12 साल हो गए हैं, आपकी अपने घर के बहुत से लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई. That's right. उन्हें आप फिजिकली यू कांट हग देम. 11 साल हो गए हैं. 11 साल. But it's unfortunate that the bar is so low in terms of Balochistan कि बहुत सारे लोग कहते हैं शुक्र है तुम जिंदा तो हो. Like that's the bar. वो मयार यहीं पे रखा है कि जिंदा तो हो, बड़ी बात है. बहुत सारे लोग हैं वो जिंदा नहीं रहे. I mean, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स, मेरे when you start counting, like अब my parents, my family, my friends, वो यही कहते हैं कि बड़ी बात है कि तुम जिंदा हो.
ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे नौजवान बलूचिस्तान के जो who had dreams, who were smart people, who were very ambitious, who could have contributed to that society, they've gone, they've been eliminated. तो अब हम जैसे लोग अभी I mean what do I complain, what should I complain about? मेरे पास तो कोई अखलाकी जवाब नहीं रहता कि अगर मैं कंप्लेन करूं कि भाई मैं अपने घर नहीं गया हूँ 10-11 सालों से। I mean I feel more for those I remember कि जब जो हेरल्ड वाली बात की कि हेरल्ड में हमने जो स्टोरी की लापता अफराद के हवाले से, वन कैरेक्टर वाज अली असगर बंगुलजई। उस वक्त उसका छोटा लड़का वो मुजाहरा करता था। अब दैट छोटा लड़का इज अ ग्रोन अप मैन, लेकिन उसके वालिद आज तक लापता हैं। 15 साल हो गए वो अपने 15-20 साल आई थिंक अली असगर वाज पिक्ड अप इन 2001। 20 साल तक एक नौजवान अपने लापता वालिद की तलाश में घूम रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग हैं। तो आई थिंक when I look at all these people, I just think my misery, my pain is nothing. I mean, जिन लोगों ने अपने नौजवान बच्चों की लाशें रिसीव की हैं, that is how we keep motivating ourselves. जो हम लोग एग्जाइल में हैं, जो बलूचिस्तान से दूर रह के काम कर रहे हैं, उसकी एक ही वजह है। I mean, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को इंसाफ फराहम करे। अब देखिए, there's a very fine line between bravery and stupidity. अब क्या मैं बहादुर हूँ? I mean, that is not my thing. मैं कोई फौजी नहीं हूँ कि मुझे बहादुर होना चाहिए। मैं लिखने वाला हूँ, तो मुझे अपने क्राफ्ट में अच्छा होना चाहिए, right? I have to be a good writer, I have to be a good researcher, I have to interact with people, I have to interview people. अब मेरे कंधों पे अगर आप ये बोझ डालेंगे कि क्या मैं बहादुर हूँ, क्या मैं लड़ सकता हूँ, नहीं, that's not my job. So when you see there is a situation when you can physically fight back. There was a time when I was in Balochistan, I was summoned every day. मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले बुलाते थे, एयरपोर्ट्स पे रोकते थे, होटल्स के कमरों में आते थे। सो आप इस ऐसे माहौल में कैसे लिख सकते हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं? तो when I was in Balochistan 2009 में ऑनलाइन मीडिया was very new. I launched an online newspaper called the Baluch Hall. Again, that was 11 years back. उस वक्त ऑनलाइन कल्चर इतना आम नहीं था, ये विजरा और सेनेटर्स वगैरह ट्विटर फेसबुक इतना यूज नहीं करते थे। तो वी हाइपर लोकलाइज्ड बलूचिस्तान के इश्यूज पे हम लिखते थे। जिन अखबारात में महीने में एक मरतबा कोई इदारा छपता था, वहां पे हमने हर रोज 2-3 इश्यूज को एडिटोरियलाइज किया। तो 2009 में गवर्नमेंट ने उस अखबार को ब्लॉक कर दिया। 2010 में when I was here in the US on a scholarship. So then I realized that there is, the news story said that the PTA had decided to block the newspaper. And I was like, 2007 में जब मुझे धमकियां मिल रही थी, that was only, whereas now it's all practical decisions कि कुछ लोग गवर्नमेंट के फैसला करते हैं कि फलां को ब्लॉक कर दो, फलां मुल्क दुश्मन है। एंड वो सिलसिला चलता रहा है आज तक। कोई ब्लॉग पे लिखता है कि रॉ का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है, फलां का एजेंट है, and then that gives you a reason, you're not stupid, you don't have to be stupid. क्योंकि मैं कहता हूँ, I mean, not only it is not applicable to me only, but it's applicable to everybody in Balochistan या anywhere in the world, कि किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी इंसान को like मार दे। Look about it. माए बच्चों को 9 महीने तक पेट में रखती है, लेकिन it's a long process to raise a kid, it's a long process. अब मुझे अपना करियर बनाने में 20-25 साल लगे हैं, एक गोली मार के आप खत्म कर देते हैं। Like if I'm not smart, if I'm stupid, then I would say yes, मैं कर लूंगा, I can work in Balochistan. But that's not true. Nobody, no Subedar, no Jamadar has the right to shoot me, because I've worked for 25 years on my career. I work day and night, and same is true about everybody. ये जो एक्टिविस्ट हैं, जो नौजवान हैं, किसी के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था बलूचिस्तान में। जितना खून खराबा हुआ है, जितना इंसानों का खून बहा है, इट्स अ टाइम। अब पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने असबर रवायत, द वे इट हैज बीन हैपनिंग, कि उन्होंने कहा कि वो बलूचिस्तान में अमन की बात करेंगे, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू गो फॉरवर्ड। दिस इज नॉट एज इफ पीपल इंतजार कर सकते हैं। अब शाहजेन बुख्ती साहब को उन्होंने असिस्टेंट बना दिया है कि वो मुज़ाकरात लीड करें। शाहजेन इज नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि शाहजेन कैन अफोर्ड टू वेट, बट शाहजेन हैज टू अंडरस्टैंड देयर आर पीपल हु कैंट अफोर्ड टू वेट। अगर अली असगर बंगुलज़ई 21 सालों से लापता है, तो उसकी फैमिली उनके लिए एक दिन
बहुत मुश्किल है, अगर डॉक्टर दी मोहम्मद मरी के फैमिली वाला है, जाकिर मजीद के फैमिली, बहुत सारे लोग हैं, आई कैन नेम एवरी इंडिविजुअल, उनके लिए एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन बहुत painful. That's why people in control, whether it's the prime minister, the chief justice, the army chief, they have to understand that this is a humanitarian disaster that is unfolded in Balochistan that needs to be stopped. People have suffered, Ab was Mary story. It doesn't make any sense. I live in America, so I don't have all those kind of complaints. लेकिन जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं उनके जो sufferings हैं उनका अजाला करना बहुत लाजमी है, and that is why I think the government has to take an initiative. बहुत सारे लोगों ने सफर किया है, सर and सिराज, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब पिछले दिनों आपने बीबीसी से भी बात की, हम वो भी देख रहे थे, और उसमें आपने बड़ी खूबसूरती से दो एंगल सामने रखे कि बलूचिस्तान में उन लोगों की शायद उतनी ज्यादा अब क्रेडिबिलिटी नहीं, हम क्या लेते हैं कि से नहीं है जो पाकिस्तान influence से नहीं बाहर है बैठे हुए हैं, जी। और से उन लोगों की है जो इस वक्त पहाड़ों में लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर अल्लाह नजर हो, वो इस तरह के जो भी लोग हैं, से उनकी है। लेकिन डायलॉग में उन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे लिए ये होता है कि आप डायलॉग में उन लोगों को कैसे एंगेज कर सकते हैं जो इस वक्त पहाड़ों पे मौजूद हैं। जब तक आपका डायलॉग उनसे नहीं होगा, वो आपके साथ बैठेंगे नहीं, वो आपसे बात नहीं, वो आप पे बात करने के लिए एतमाद नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। क्योंकि आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि उन लोगों की शायद इतनी ज्यादा से नहीं है बलूचिस्तान में, जो इस वक्त लंदन में है, स्विट्जरलैंड में है, या कहीं और बैठे हुए हैं। उनकी बजाय उन लोगों की ज्यादा से है कि जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, उनका कोई भी स्टैंस हो, जरूरी नहीं कि मैं उनके स्टैंस से एग्री करूं, और ये भी जरूरी नहीं कि मैं उनके स्टैंस से डिसएग्री करूं, बट ठीक है, उनका अपना एक स्टैंस है और वो उस पर लड़ रहे हैं। तो लेकिन उन्हें कैसे एंगेज किया जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक? एक तो आपके इस बात से सामने आया कि ये मिसिंग पर्सन अंडरस्टैंड, का जो प्रॉब्लम है, अगर इसको एड्रेस किया जाए तो फिर कोई हमवार हो सकती है। इससे बढ़ के आगे क्या किया जाए? I think there needs to be multiple rounds of conversations. It is not as if कि आप एक दिन में इस मसले को हल कर सकते हैं, एक कमेटी के थ्रू मसले को हल कर सकते हैं. This is recently I wrote about it that there's been a lot of bloodshed. There is a lot of angst on both sides. बहुत सारे जो हैं फरीकीन हैं. Suppose अगर आप मसलन to be the devil's advocate, बलोचों पे आप बात करने के बजाय आप गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देख लें. अगर आप IGFC हैं, अगर आप कोर कमांडर हैं, अगर आपके नौजवान मार दिए गए हैं IED अटैक्स में, दूसरे तीसरे अटैक्स में, तो आपके लिए मुश्किल होगा टू लेट इट गो, राइट? आप कहते हैं कि आप जो सो कॉल्ड मुल्क दुश्मन अनासिर, आप उनका कला कमा कर देंगे. ऑन द अदर हैंड देयर इज द सेम थिंग कि इतने सारे लोग मरे हैं, इतने सारे लोग मार दिए गए हैं. और अक्सर ये बात होती है कि जब बलूचिस्तान की हिस्ट्री पर बात करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ व्हाट अबाउटिज्म. लोग एकदम जंप करते हैं, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट नवाब नौरोज खान, व्हाट अबाउट अख्तर मेंगल, व्हाट अबाउट अख्तर मेंगल छह नुकात, राइट? लोग जंप करते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ. So there's a lot of distrust, and it's really important. First of all, there is a need for confidence building measures from all sides, in the sense that the government, the state is the motherly figure. The state obviously has a bigger role as compared to others. I don't think the state does not have the resources. State के पास resources हैं, उनको पता है इंटेलिजेंस सर्विसेज के थ्रू कि अल्लाह नजर कहाँ पर है, उनको कहाँ से मदद मिलती है, वो लाइक कौन लोग उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये स्टेट की जिम्मेदारी है. स्टेट के पास वसाइल हैं, स्टेट के पास बैंडविड्थ है. When the state takes the initiative कि भाई जो कुछ इश्यूज हैं, आप लेट्स नॉट टॉक अबाउट द हाईएस्ट इशू के जो बलूचिस्तान की आज़ादी का वो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जब आप लापता अफराद के इश्यूज पे इनिशिएटिव लेंगे, जब आप लापता अफराद को वापस करना शुरू कर देंगे, तो एक तरह से जो सेपरेटिस्ट नैरेटिव है वो कमजोर होता जाएगा, वो आइसोलेट होते जाएंगे. फिर आपके लिए कोई जवाब नहीं रहेगा कि आप कहें कि भाई गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है. अगर वो कहते हैं कि चेक पोस्ट का खात्मा हो, आप चेक पोस्ट का खात्मा कर दें. अगर वो कहते हैं कि गवादर की फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, गवादर के लोग वही हैं, बलूचिस्तान के लोग वही हैं, आप इस्लामाबाद में ये फैसला ना करें, राइट? अगर आप उन पे फैसला मुसल्लत करते हैं तो दिस बिल्ड्स ऑन एन एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट. फिर तो आप एक दूसरे के साथ एतमाद नहीं कायम होगा.
it is very important. Both parties have to understand that you will have to give and take. This is not going to be only take. This is going to be give and take. Okay, obviously, I mean, it's very, very obvious that no government is going to concede to the demands for a free Balochistan. कोई भी नहीं करेगा, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या मुस्लिम लीग की हो, वो उस पे राजी नहीं होंगे. तो लेकिन अगर वो और इश्यूज पे राजी होंगे कि चेक पोस्ट कम करेंगे, वो मिलिटराइजेशन जो है वो बलूचिस्तान की एक्सी का जो रोल है उसमें तखफीफ करेंगे और लापता अफराद को बाजियाब करेंगे, सीपैक में गवादर पोर्ट में बलोचों को कॉन्स्टिट्यूशनली वो गारंटी करेंगे कि उनकी नुमाइंदगी होगी, आइन में जो उनकी राइट्स हैं और रेफ्यूजीज के हवाले से जो उनके कंसर्न्स हैं, ये कुछ इश्यूज हैं. अगर इस पे गवर्नमेंट स्टेप्स ले, फिर आप 6 महीने तक इंतजार करें. देयर इज नो रीजन कि BLA या BRA जो बाकी मुसल्लह तंजीमें हैं वो सीज फायर का ऐलान ना करें. आप उनके सामने ये रख रहे हैं कि हम ये करेंगे, आप इन रिटर्न ये करें. तो दिस इज हाउ यू बिल्ड लॉन्ग पीस. दुनिया में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बड़ी जंगें रही हैं. And at the end of the day, everybody realizes that you resolve them on negotiation table. No matter कि आपका ईगो कितना बड़ा हो, आप कहें कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप कभी negotiate नहीं करेंगे. We know, at the end of the day, there is got to be negotiations to solve the problem. And we see, Balochistan was relatively peaceful in the 1980s and 90s, obviously. So there's got to be some flexibility. जो लोग हैं on both sides, as I mentioned before, they have to understand the very heavy cost of this conflict. इससे बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं, displaced हुए हैं. One of my friends gets offended when I say I'm a collateral damage. And he's like, you either have to be on this side or on that side. I'm like, I'm on nobody's side. जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के, जिनको कंपेल किया गया वो बलूचिस्तान छोड़ के चले जाएं, जो हजारा निकल गए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, they're all collateral damages. And people have suffered. And similarly, जो लापता अफराद हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रहा है, जो they might have a political opinion, but they are not a part of these armed groups. तो वो उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे क्यों सफर करें? That's why both sides have to understand कि अगर आप इस जंग को परपिचुएट करेंगे, ये आपको तो फायदा इससे पहुंचेगा, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं, they will continue to suffer. And then peace has to be given a chance. Both sides, and it's the people. The people have to claim their space. That people have to live a peaceful life. They don't want to be a part of somebody's Azadi agenda or somebody's other agenda. Where the Pakistani government tries to influence कि कोई हर बलोच जहाँ जाए पाकिस्तान का एक एजेंडा इधर लगा, एक उधर लगा है. भैया पंजाब के लोगों से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हर 2 कदम पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, वो पाक फौज की तारीफें करें. तो बलूचिस्तान के शहरी के लिए आप क्यों ये प्री कंडीशंस रख रहे हैं कि हर 2 कदम पे आप कहें कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तान के लिए जान देंगे? You have to develop very natural human beings rather than कि आपने जो सेनेट बढ़ दिया है, जो बलूचिस्तान असेंबली बढ़ दी है, ऐसे लोगों के साथ हम विल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद. सेनेटर ऐसे ही बन सकते हैं, आपको ये झंडियां लगाने की जरूरत नहीं है. तो बलूच जो सिटीजनशिप है उसको क्वेश्चन करना छोड़ दिया जाए. दिस हैज टू बी अबैंडन्ड. बलूचों को बराबर सिटीजन समझा जाए. जितना इमरान खान पाकिस्तानी शहरी है, जितना आर्मी चीफ साहब हैं, तो वो जिनके पास आईडी कार्ड है, as long as they have the ID, they are equal citizens. और वैसे बाय द वे मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के झंडे का जो कोयटा में एक बड़ा मजेदार इस्तेमाल मैंने देखा, जिस गाड़ी की डैशबोर्ड पे पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे, समझ जाएं कि ये एनसीपी है. And by the way, by the way, last question, सिराज, मैं चूंकि बलोच माशरे को जानता हूं, मैं बलोच माशरे में पैदा हुआ, मैं वहां रेज हुआ, मैं उन लोगों को जेनेटिकली बलोच लिबरल है, सेकुलर है, डाइवर्सिटी को एंजॉय करने वाला, हर बलोच जेनेटिकली डाइवर्सिटी को एंजॉय करने वाला है, वो प्यार करता है हेरिटेज के साथ, कल्चर और हिस्ट्री उसकी सांसों के साथ चलती है. बड़े मजेदार लोग हैं हमारे बलोच. अब कहीं कहीं ये रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं न्यूज मीडिया में कि बलोच जिन्हें हम कहते हैं सरमचार या बागी या फ्रीडम फाइटर्स कह लें आप उन्हें, इंसर्जेंट्स कह लें, कोई नाम दे दें आप उन्हें, उनका रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के साथ
कोई एक बॉन्ड डेवलप हो चुका है या हो रहा है या इन प्रोसेस है, या लॉजिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, या ये कोई इनके एजेंडास को करीब करीब लाने की कोशिश की जा रही है, या नेचुरली एक अलायंस डेवलप हो रहा है? तो क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजूहात हैं, और ये खुद बलोच माशरे के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये मसला बहुत अरसे से जारी है। उसकी वजह यह है कि to solve one problem, the state has created another problem, which does not seem to be a problem for them. कि बलोच नेशनलिस्ट को काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी जो कुव्वतें हैं वहाँ पे उनको बहुत एम्पावर किया है। मदारस की तादाद में इजाफा हुआ है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया है, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू काउंटर द बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो अब ये जो तंजीमें हैं, मसलन लश्कर जंगवी, दैट्स लाइक द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन बलूचिस्तान। लश्कर जंगवी में बहुत सारे बलूच हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और सिमिलरली जो ईरानी बलूचिस्तान है वहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रही हैं जंदुल्ला और जैश उल अदल के नाम से, अब वो क्योंकि ईरान के जो बलूच हैं वो दे फेस डुअल डिस्क्रिमिनेशन। एक तो वो सुन्नी हैं एक शिया मेजोरिटी कंट्री में, एक वो एथनिक बलूच हैं उस पर्शियन जो कुव्वतें हैं उनको बहुत अब इस सूरत हाल में देखिए पाकिस्तानी स्टेट हैज टू डिसाइड कि क्या बलोच नेशनलिस्ट आपके एलाइज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जो बंदूक से आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, या वो इंतहा पसंद जो कि बस से लोगों को निकाल के उनकी गर्दनें काटते हैं, जो खुद को हमले करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मजहबी कुव्वतें हैं उनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है दैट्स वे मोर डेंजरस, दैट्स वे मोर डेंजरस। उसको काउंटर करने के लिए आपको नो डाउट एक लिबरल मुआशरा चाहिए, एक सेक्युलर मुआशरा चाहिए, जिसमें आपकी जो मजहबी ख्यालात हों, आप जिस चीज़ को फॉलो करें, आपकी मर्जी हो। अब ये कहना कि फ़लाँ फ़िरका काफिर है, फ़लाँ गैर मुस्लिम है, ये नहीं चलेगा किसी सोसाइटी को चलाने में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉलरेंट हों। तो बलूच सोसाइटी में मज़हब, बलूच मुसलमान तो रहे हैं ना, 5 वक्त की नमाज तो सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट दैट वाज अ पर्सनल मैटर कि अगर मैं मस्जिद जाता हूँ नहीं जाता हूँ तो दैट्स माय पर्सनल मैटर। अगर रोजा रखा है तो नहीं रखा, लाइक दैट्स नॉट एज इफ कि बलोच अगर जब हम कहते हैं कि सेक्युलर हैं तो वो गैर मजहब हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। लाइक व्हेन आई ग्रो अप इन अ फैमिली, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 5 वक्त के नमाजी हैं, वो रोजा रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, बट दे नॉट एक्सट्रीमिस्ट। they're not कि वो भाई अपना जो अपनी राय है वो दूसरे पे मुसल्लत कर दें कि भाई वो जिहाद के लिए जाएंगे, तो उस तरह के आपको बलोच नहीं मिलती मजहबी राय ऐसी हो। बट ओवर दिस टाइम्स बलूचिस्तान का जो मुआशरा है, जिस तरह हमने बात की कि बहुत वेपनाइज हो गया है। अब हर किसी के पास वेपन्स आ गए हैं। अगर आप नेशनलिस्ट हैं, अगर आप मजहबी सोच रखते हैं तो मजहबी अनासर के पास ज्यादा नॉट ओनली हथियार आ गया है, वेपन्स आ गए हैं, बल्कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस के ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो कार्रवाई करके छुप सकते हैं, जा सकते हैं। तो इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली आई मीन एज अ सोसाइटी आप देखें कि what is the immune system of the Baluch society, to what extent can it resist, that's very important। क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिव नैरेटिव फराहम नहीं करेंगे, अगर आप जो अल्टरनेटिव फोर्सेस हैं उनको स्पेस नहीं देंगे, तो फिर तो एक्सट्रीमिस्ट कैप्चर कर लेंगे। नॉट कि उनका जो बयानिया है वो बड़ा मुतासर कौन है, बल्कि उनके पास हथियार है, उनके पास वेपन है, तो फिर वो आपको सब्जुगेट करेंगे। दैट इज व्हाई आई थिंक at this point, I don't think, personally, I don't think there's a connection between the Baluch armed groups, जो BLA वगैरह हैं, versus जो लश्कर जंगवी है, जो जैश अदल है। But this is very natural कि उनके अगर आदाफ एक होते हैं, अगर वो समझते हैं कि they can help each other, at this point, they target the state. अगर state को target करने में they can cooperate with each other, they will do it, and I think at one point they would look at the enemy. Similarly, when you look at all these disappeared people, for example, लश्कर जंगवी में जो लोग हैं, they know all these people कि फिलहाल हमारे मोहल्ले में फिलहाल का लड़का उठा लिया गया, फिलहाल की वालिदा प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रही हैं। So in a way that hatred toward the security forces becomes
रिलीजन एंड एथनिसिटी ब्लाइंड, वो जो बंदा फिर कार्रवाई कर रहा होता है वो ये नहीं देखता कि मैं मजहबी हवाले से एफसी पे हमला कर रहा हूँ या कॉम्पल्सी के हवाले से एफसी पे हमला कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये कहते कि बाहर का बंदा आया हुआ है, बाहर के लोगों ने हमारे बच्चे को उठाया है। तो इन अ वे देयर इज अ वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस कि इनको दूर रखना ज्यादा मुश्किल है कि इनके जो चीजें इनमें मुश्तरक हैं वो ज्यादा पॉसिबल है। वो एक ही जमीन यूज करते हैं, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर इलाके में काम करते हैं, एक ही सोसाइटी में वो काम करते हैं। रिक्रूटमेंट इन्हीं फैमिली से होती है। अगर एक लड़का बीएलए चला जाता तो दूसरा शायद लश्कर जंगवी चला जाए। ऐसा नहीं कि एक ही फैमिली में सारे लोगों की राय मुख्तलिफ है। So I mean the state has to do some damage control, but unfortunately I think right now the state has more inclination. इवन इमरान खान लेवल पे जो रियासत मदीना की जो बातें होती हैं, ये एक तरह से मजहब का जो कार्ड है इस्तेमाल किया जाता है, उसको इंसर्ट करने की कोशिश की जाती है उन स्पेसेस में जहां मजहब का रोल नहीं होना चाहिए। मजहब का एक महदूद रोल होना चाहिए और मजहब का ये भी हो कि आप दूसरे का एहतराम करें। अब हमारे यहाँ अगर इस मसले को नहीं रोका जाता, पहले तो शिया बरादरी पे बहुत सारे हमले हुए हैं। हम रिसेंटली सुनते आ रहे हैं कि मकरान में जो जिक्री कम्युनिटी है, जिक्री कम्युनिटी पे भी बड़े हमले हो रहे हैं। वो एक तरह से कोशिश ये की जाती है कि भाई उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए, काफिर डिक्लेयर किया जाए या उनको कन्वर्ट किया जाए। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है और इन द स्टेट कैन नॉट ऑपरेट अलोन फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको लोकल स्टेक होल्डर्स चाहिए होते हैं, आपको लोकल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, और वो पार्टनर्स अगर आप माने या ना माने आपको बलोच नेशनलिस्ट ही में मिलेंगे। वो लिबरल जो सोच है या जो एक्सट्रीमिस्ट सोच को फिल्टर करने वाले लोग हैं वो बलोच नेशनलिस्ट ही हैं। आप उनसे लाख इख्तिलाफ करें लेकिन डॉक्टर अल्लाह नजर इतने बुरे नहीं होंगे जितना एक बंदा जो खुदकुश हमला कर लेता है, लोगों की गर्दनें काटते हैं। तो अल्लाह नजर है ऑब्वियसली इन सम इंस्टेंसेस उनकी तंजीम ने गलतियां की हैं, मजदूरों को मारा है। But at the same time, I think there is a way to rebuild that relationship with the Baluch nationalists, and the Baluch nationalists also have to re-evaluate their strategies. जो मजदूरों पे हमले होते हैं, जो आबादकारों पे हमले होते हैं, at the end of the day, everybody has to realize, that they have to come together to build peace. And अब 20 सालों में जितना डैमेज हुआ है उसको रीबिल्ड करने में, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने में, पीस रीबिल्ड करने में शायद हमें 30 साल लगे, 40 साल लगे ताकि कॉन्फिडेंस बहाल हो। और अनफॉर्चुनेटली during that time there's a generation that we have lost. We have lost a generation that grew up in the midst of violence and displacement and anger and anguish, and that's very unfortunate. As adults, और या हमसे जो बड़े लोग हैं, जो senators और MPs और MNAs हैं, जो chief minister रहे हैं, they have to acknowledge कि ये उनकी गलती हुई है, and it was not a small mistake. It was a big failure on their part, and which is why we have a lost generation in Balochistan. That's right. Thank you, Malik Siraj Akbar. Thank you for your time, and Thank you, hope to see you soon and again. Yeah, sure. Come to DC. Would love to. We'd love to. That's easier. That's easier. That's easier. Or I would love to host you here in Islamabad one day. That's you have a place here. This is your own home. I remember IGFC Saab used to say once, he's like, Siraj, we can host you there in somewhere in Dera Bukti. And I was like, thank you, sir. Thank you. So I hope it's not going to be one of those kind of hostings. I'm just kidding. No. It's your place. It's your home. Thank you. Thanks for the opportunity for this very frank conversation. And I look forward to continuing this partnership with you. Inshallah. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz.